Gurugram is far. You are coming from where? Tell me the location. Bitorni. I know. I know entire Delhi. You know, from south to north, east to west. Huh? Timing. What? It's too early. No, it's not too early. It's not too early. Consider your class would have been at 5 o'clock in the morning. There are people who are coming to the class to take class at 5 o'clock in the morning. It's not too early. यार ये अभी तो जॉब पे लोग चले जाते हैं. बताओ गुड मॉर्निंग क्या सोना लगता है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है ऐसा कुछ. You have metro, good transportation. In our days there was only bus. You should take bus and you have to change bus. Right? 3 बसें चेंज करके कहां से कहां जाते थे हम लोग. नहीं नदियों से वो नदियों वाला मैं नहीं. Our generation did not face such difficulty. We had buses. बस दिक्कत थी. देखो दिक्कत थी. We have to recognize. आपका पेपर नहीं आया है शांत. ऑनलाइन दिया है. ऑफलाइन दे दो ना. डेली आते हो दे दो मुझे. क्या फेंक दिया उसको है ना तो दे दो ना मुझे. कल ले आओगे. कल तो नहीं ले पाओगे. आपके ऑनलाइन में चेक कर लूंगा बट बेटर इफ यू सबमिट इट ऑफलाइन. सर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. ओके. अच्छा बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो ना. Are you reading Bear Act along with the article? I have I have gone through the notes on article. It's a good one. It's a good one. Right? For example, notes on article 20, 21, 22 आज मैं पढ़ा हूँ. It's a good notes. Right? कोई डाउट है आपका? Any doubt if you have? Vinay, have you submitted paper today? To whom? Okay, submit before 4 o'clock so that I can receive. You'll submit to me on Monday. Today itself. Okay, come aa jao. Where is Sakshi? She's coming. आ जाओ अकेले अकेले. Come. Yeah. So yesterday we had discussed few issue. आज ना नहीं और भी संथारा we discussed, capital punishment we discussed, और कौन था और एक और था सुसाइड. या सुसाइड करना है कि नहीं करना है. राइट. Whether so today we'll discuss a few more concepts, more debate. Before we begin debate, today Indian Express has covered good on one nation, one election. Right? The committee has submitted already report. The high level committee headed by Ramnath Kovind. It is also called Kovind panel. होता क्या है पता है बीजेपी में ऑलरेडी डिसीजन बना लेते हैं. उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बैठती है. एवरी स्टडी होता है और डिसीजन वही होता है जो ऑलरेडी. दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड. यू हैव ऑलरेडी आइडिया. राइट. जस्ट यू हैव टू सबमिट अ कमिटी, set up committee, you have to examine and then conclude the same thing. Similarly, on history, they have, complete idea, whatever the history should be, right? Now they investigate and produce that kind of history that they want, right?
One more example I can give on tribal history, right? The tribal history. I'm engaged with research. उनके पास already idea है कि क्या क्या होना है. Now you have to set up a research team. You have to produce the same narrative they want, right? ऐसा होना नहीं चाहिए. Let's discuss, let's investigate, and then conclude. होता है ना, एक होता है पर्पसिव स्टडी, टेलीलॉजिकल मेथड. सुना है टेलीलॉजिकल मेथड क्या होता है? You do for the some purpose. Your purpose is fixed. Your purpose is fixed. Now you do everything for them. But that is not good research, right? Anyway, so Kovind panel have Kovind na Ramnath Kovind panel have already given suggestions. It is in 18,000 pages, right? There are right there are 18,000 pages recommendation have been already be given. And recommendation इसमें दो चार recommendation, एक recommendation कह देता हूँ. वो कह रहे हैं कि ठीक है, one nation one election हो जाना चाहिए. बट कंफ्यूजन ये था कि अगर मान लो कि किसी स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, लेट्स से कर्नाटका और मध्य प्रदेश, और वेरी मच फ्रैगमेंटेड decision comes in Bihar, like Uttar Pradesh. In that case, what will happen? There will be repetition of election. फिर one nation one election हुआ कहाँ? नहीं, इनका ये है कि see, considered tomorrow there will be no confidence motion after 1 year. There may be one confidence motion and government may collapse. Then there shall be election in that state only for the remaining period. For the remaining period, मतलब 4 साल के लिए रहेगा. Yeah, consider the government survived on 3 years, and after that the government collapsed. Then there shall be fresh election, but only for the remaining period. Right? तो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ कहाँ? हाँ, ये तो डबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा कि एक बार तो यू कंडक्ट इलेक्शन, राइट? कंसिडर गवर्नमेंट चला नहीं, आपने फिर से उसको. सो यानी कि विद इन 5 years देयर विल बी ह्यूज deployment of resources and the staff at one time when there is a one nation one election, and then there will be again repetition. Of course, it's not good for state. Government, God knows about recommendation. अभी आया है, थोड़ा उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. See, the first election in independent India was one nation one election, right? Until 1967 there was a one nation one election, right? In 1967 उससे पहले भी, if you look at Kerala government collapsed, right? And there was an election. But if you look at then thereafter what happened, there was a national election and there's a state election on different occasions. In 1 year you can find 5 election, at least 5 state faces election. जब वो 10 year खत्म हो जाता है फिर उसका अपना election होता है. When the national government actually complete the 10 year, then there is a government. It also happens that national government did not complete the entire 5 years. There are many occasions. Look at Bijendra government, right? There was a coalition government at the center that did not actually completed 5 years. उस केस में क्या हुआ? Election हुआ. Consider कल election होता है national government का, right? And consider there is a fractured mandate. Fractured mandate मतलब there is full majority to any party. अब क्या होगा? Or state में consider all in all states there is a full majority, but national government does not get full majority. There may have an election. So one nation one election. Where is in one nation one election? Exactly. Lots of problem है, वो तो अलग बात है. वो issue है resource deployment of resources, money expenditure. That is keep aside everything. Where is one nation one election? One nation one election means one time election, then 5 year, one election, 5 year, one election, 5 year. But government may not survive 5 years.
either of the national government or the state government. It depends on the particular time period. अभी बीजेपी को फुल मेजोरिटी आ रही है. दे कांट सिक्योर कि वहां अगले 50 साल तक हमारा से फुल मेजोरिटी आएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. There may be, the national government may face fractured mandate. Anyway, we'll discuss. But आज अच्छा आया है. Yes, you cover it. And there may be a question, of course, on this. GS में तो पक्का रख लो. बुरा कुछ भी नहीं लिखना है. Both sides you have to write. You have to be neutral, right? And you have to be supportive to the state. Yeah, state का stand लेना है, government का stand लेना है, right? But you can write something, both advantages and disadvantages. Be neutral, be analytic. ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. If you do criticize, अगर disadvantages में कुछ ऐसी बातें लिखते, there is no issue at all. Advantages में भी लिखना है. एक साइड नहीं घूमना है ना? दोनों साइड लिखनी है आंसर्स में. एनीवे, कल हमने कहा था इस बेल. चलिए बेल के बारे में बात कर लेते हैं. इस बेल थ्रेट टू लिबर्टी. इट्स डिनाइंग बेल, नॉट बेल. इज not giving bail is a threat to liberty. Do you know bail? Actually, Article 22 में भी आता है bail, right? What is bail? भाई इज्जत बरी करना वो अलग होता है, वो अलग होता है. What is bail? How you to define bail? Anyone? जोर से. हाँ. Yes. It is a judicial release. Judicial release, yeah, on the basis of condition, of course. Judicial release, on certain condition. ठीक है, right? अब बेल कितने तरीके का होता है, किसी को पता है? बेल कितने तरीके का होता है? मूवी में देखिए, राइट? मिनिस्टर बेल नहीं होता है, तुरंत पहुंच जाता है बेल लेकर के. there are 4 types of bail. एक को होता है जिसको हम कहते हैं एंथरिम बेल. हैव यू हर्ड अबाउट एंथरिम बेल? राइट? एंथरिम बेल क्या होता है? What is interim bail? Second is called, one bail is called a regular bail. Another is called default bail. Right? और एक और होता है, sing the name. These are the types of bail. बेल नहीं कहते उसको, पेरोल कहते हैं. पेरोल कहते हैं. राइट? राइट. अच्छा, क्या है बेल जो है ना, बेल इज अ लीगल राइट. Bail is a legal right. Sometimes, if you talk to lawyer, they will tell you, the bail is regular and jail is, exceptions. That is interim bail, right? अच्छा, interim bail होता है, right? कि कौन सा बेल होता है इस जो पहले दे दी थी? एंटिसिपेटरी बेल. या फोर्थ याद आ गया. ठीक है. अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल कब मिलता है? इन ऑल द नॉन बेलेबल ऑफेंस में देयर कैन बी एंटिसिपेटरी बेल. एंटिसिपेटरी बेल मींस आप जैसे एफआईआर लगी, आपने लॉयर को बोला, वो अपने आप से मजिस्ट्रेट से बेल लेके आ गया. राइट? सॉरी, मेडिकल बेल नहीं बोलते. दैट इज अ बेल ऑन रेगुलर बेसिस. या रेगुलर बेल होता है, अभी बताता हूँ सारा वन बाय वन बताता हूँ. मुझे भी तो आने दो याद होता क्या है. राइट? याद करके थोड़ी आता हूँ कि हाँ. अच्छा, रेगुलर बेल होता है कि इट इज बेल गिवन बाय द जुडिशरी ऑन गिविंग certain condition. You have to fill bail bond,
right? And then one can get bail, right? ठीक है? So anticipatory bail क्या होता है? Bail in advance. Bail in advance मतलब फिर कस्टडी में नहीं जाता. You don't need to go in custody, right? Sorry. हाँ, अभी अरेस्ट से पहले ही मिल जाती है. That is called anticipatory bail. The bail in advance. That is one bail. अच्छा, डिफॉल्ट बेल क्या होता है? डिफॉल्ट बेल जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ. डिफॉल्ट बेल इज एक्चुअली a bail given by the judiciary because of the default, fault of the agency ने बहुत टाइम लगा दिया, प्रेशर में बहुत, right? So person gets bail, right? So bail given by the judiciary, in case of due to lengthy time taken up by the agency, taken by एजेंसी. एजेंसी कौन है? पुलिस होता है, राइट? पुलिस, राइट? अंतरिम बेल होता है. इट इज अ वेरी मच कंडीशनल बेल, राइट? यू आर बेल बट यू हैव टू बी इन एनी टाइम. You have to come, you have to come to jail, right? You are antrim bail. Bail means temporary bail. Temporary. अंतरिम का मतलब ही होता है टेम्परेरी. अंतरिम गवर्नमेंट, राइट? ठीक है? फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड यू कैन गेट बेल. दैट इज कॉल्ड अंतरिम बेल. नाउ रेगुलर बेल इज it is a judicial release. Yeah, there are different names but all are bail. Bail is a legal right. Bail is a legal right. Why bail is a legal right? Because liberty is a individual's right, right? One state cannot deny liberty. लिखा है ना आर्टिकल 21 में, no one shall be denied to right to life and personal liberty. So only accused get bail. Let me tell you, only accused get bail, right? Once you convicted you can't get bail. ठीक है? एक दो चीज और समझा देता हूं यहां पर. हाँ बोलो. ड्यू टू पुलिस, हाँ, ड्यू टू लेंदी टाइम टेकन बाय पुलिस. राइट? एक्चुअली ये आर्टिकल 22 से बड़ा रिलेटेड है. सी व्हाट हैपेंस, सी आर्टिकल 20 गिव्स यू a certain right against the law offense, right? Now article 21 gives you right to liberty, personal liberty. Article 22 gives you right against your arrest. ठीक है? When someone is arrested, मान लो आपका अरेस्ट हो गया, राइट? Once someone is arrested, उसको कहां ले जाते हैं हम? राइट? कहां ले जाते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, राइट? या विदिन 24 आवर्स, या within 24 hours a person should be produced before the judicial magistrate. और उस पर्सन को बताना पड़ेगा कौन, what ground that person had been arrested, and that person have a right to consult any lawyer of his own choice. ठीक है? इतना राइट्स है उसके पास. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यू आर इन द पुलिस. यहां पर इसको बोलते हैं हम पुलिस कस्टडी. कस्टडी, राइट? अब पुलिस कस्टडी में जाने के बाद अब मैजिस्ट्रेट क्या करता है? मैजिस्ट्रेट आइदर विल गिव बेल, right? Or it will give the person into the police custody again. That is called remand. Have you heard about remand? पुलिस रिमांड पे है. नहीं, मारती नहीं है. पुलिस हैव नो राइट टू हरास अ पर्सन. डीके बासु का एक पेज नहीं मिला है, मैंने दे दिया था कल उनको, ऑलरेडी है. एक पेज जाते वक्त ले लेना.
DK Basu guideline is very important regarding one person is arrested. Police has no right to harass in any manner. Even if you have killed someone, let me tell you. Even if you have killed or someone has killed someone, the arrested person have, of course, हमेशा accused ही होता है शुरू में. पुलिस कुछ नहीं कह सकता कि यही आदमी इसने किया या इसने किया, right? पुलिस को काम है कि उसको confinement करना. हाँ, if that person actually resort to violence, then police have right to encounter, right? मतलब right to retaliate. अच्छा, तो नाउ व्हेन, अच्छा क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वहां पर आइदर पर्सन गेट बेल और द पुलिस may take person remand. Earlier this police custody was 15 days, you know. Earlier the police custody period was 15 days, right? And after 15 days again the same person will be produced before the judicial magistrate, and again magistrate will ask, do you want him further? Or police may say, sir, we have not inquired enough, right? Police to seva karti hai, कहने का है कि he will not do anything, but police, right, स्वागत करती है, right? They welcome with 1 degree, 2nd degree and 3rd degree. There are people are being killed in the police custody, right? ठीक है, that is called custodial death. Have you heard about? That is the extrajudicial killing. Yes, it is illegal. It is completely illegal. गलत बात है ये. हाँ, जॉर्ज फ्लॉयड को तो उसको उसके घुटने से मार दिया था, या राइट. हाँ, वो इसके टाइम पे ही मार दिया. पुलिस हैव नो सच जॉब. Look at, but police as an institution, right, it is a potential violence, right? नहीं, right? कभी प्रोटेस्ट में गए हो, देखो कौन सा पानी, वो पानी जो चलाती है, वाटर कैनन देखा है? वाटर कैनन, उसके बाद डंडा, उसके बाद गैस, to disperse the, you know, mob, right? Anyway, but when there is an individual arrest, right, this is the process followed. Now if you look at under the BNS, the Bharatiya Nyay Samhita, BNS, this police custody has extended to 60 days. Now it means the police can, you know, ask for remand for 15 days, 60 days under the Bharatiya Nyay Samhita Act. Now question is, does it actually harm the personal liberty? बिल्कुल, you have to decide. ठीक है, you have to decide. Yes, it harms the personal liberty. If you ask the person from the PUCL, right, People's of Union Civil Liberty, who actually protect the civil liberty, he say yes, it harms the personal liberty. It actually violates Article 21, right to personal liberty, right? मैं अब Article 22 में भी चला आया हूँ, right? So 21, 22 बड़ा interrelated, 20, 21, 22, right, is interrelated है. Now question is, now अब होता है कि मान लो कि इसके बाद ये फिर से कहाँ ले जाएगा? Magistrate के पास. Now magistrate, again here magistrate may give bail after the 15 days. It's not कि bail पहले दिन मिल जाता है, हो सकता है bail after 15 days, after 30 days, depends on, right, the nature of crime, of course the judges, right, judge का क्या perspective है, right? अगर मान लो कि if it is a non bailable offense, then person goes to in jail, right? The person goes to jail, and this is called judicial custody. मतलब पुलिस को भी तो चाहिए, पुलिस चार्जशीट कैसे बनाएगा, वो ज्यादा सही है, करेगी और सीधा, राइट? और यहां पर जो लोग हैं उसको बोलते हैं हम अंडर ट्रायल. दैट इज कॉल्ड अंडर ट्रायल. अंडर ट्रायल मीन्स hearing has not been initiated. Hearing has not been initiated. Yeah. Hearing. Killing me, hearing has not been started. That they are called under trial. And if you look at Indian jails are actually full of under trial. Indian jails are full of under trial.
Right. What happens in person in some petty crimes? क्या होता है? They have been arrested. कोई बेल लेने के लिए नहीं आता है. मैं बता रहा हूँ बेल तभी मिलेगा जब आप क्लेम करोगे. राइट्स की तरह है ये. You will get rights when you claim for it. If you don't claim, you will not get rights. Someone will override your rights. हाँ, yes, Akas. 15 days के लिए अगर तो 15 days रखती है, अगर 15 days के पहले इसको काम हो गया तो 15 days के बाद उसको वो सबमिट कर देगी जुडिशरी को. हाँ, जज के सामने ले जाएगी, बट ऐसे नहीं कि बीच में ही लेके चली जाएगी. नहीं, जज के पास भी बहुत काम होता है. देयर इज अ शेड्यूल्ड टाइम, देयर इज अ शेड्यूल्ड डेट. जज का देखो 1-2 महीने का वो सारा बना रहता है. राइट, फलाना तारीख को आप आना, फलाना तारीख. क्यों 3-3 महीने बाद जो वो मिलता है, तारीख मिलता है? क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल्ड होता है चीजें. राइट, तो पुलिस बीच में नहीं लेके चली जाएगी कि मालिक हो गया हमारा, अब काम अब ले लो. 15 दिन तक उसको रखेगी. ये पुलिस का काम नहीं है. पुलिस का ये काम नहीं है कि ये क्राइम में इन्वॉल्व था कि नहीं था. पुलिस का ये काम है कि रिकॉर्ड करना. राइट, रिकॉर्ड करना और एविडेंस कलेक्ट करना, जो भी एक्विजिशन इस पर्सन के अगेंस्ट में है, ये काम पुलिस का है. राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन पार्ट. हाँ बोलो. रख लेती है. रख क्या लेगी? रख लेती है. मैं बताता हूँ. देयर इज अ क्लॉज ना, आर्टिकल 22. द पुलिस विल प्रोड्यूस द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours. Now they will arrest you on Friday evening. हाँ, दो फ्राइडे इवनिंग वो अरेस्ट करेगी. द पुलिस विल अरेस्ट यू ऑन फ्राइडे इवनिंग. नाउ सैटरडे इज कोर्ट क्लोज्ड, संडे इज क्लोज्ड, ऑन मंडे विल बी प्रोड्यूस्ड. और ऐसा मारती है कि चोट भी नहीं लगता है, मतलब दिखता नहीं है. उनके पास पुलिस को पता है. आई एम नॉट इन पुलिस. यू हैव टू आस्क पुलिस कि कैसे 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 पिटाई करती है. पता भी नहीं चलता कुछ नहीं. राइट, बस उसको दर्द होता है जो who the person who are in custody, उसको पता चलता है. नो 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 नो, आप ऐसा भी नहीं हो सकता. राइट, डीके बासु को पढ़ो. Let me tell you, when the person is arrested, person can claim that I want to go to medical checkup. Let me tell you, I want to go to the medical checkup. Police cannot take you that blindly to your police station. You can go to many politician does same. तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत बोलता है मुझे बहुत तबीयत खराब है. Yeah, it happens, right? So because they knows the loopholes of the law and then they actually exercise it. Common इंसान को पता नहीं होता है. Right? पता लग गया, अच्छी बात है, पता होना चाहिए. अच्छा, did you get the idea of judicial custody? Now पता, मान लो कि अगर पुलिस को दोबारा इस पर्सन को कंसल्ट करना हो. Consider a person is under trial A. Now we are talking about A. If person is A is under trial, how police can access A? Exactly. Without the judicial magistrate permission, the police cannot consult A for the further inquiry. अगर मान लो कि 15 दिन के कस्टडी रखा, उसमें उसने उसको लगा कि ठीक ठाक है सब कुछ. अब मान लो कि फिर से उसको पूछना हो. राइट, उसको बोलते कोरोबोरेशन. 15 दिन के बाद दिया मजिस्ट्रेट के पास. मजिस्ट्रेट ने पूछा क्या जी आपका काम हो गया? उन्होंने बोला yes yes I have done all the recorded record. Now we don't need that person. Now the judiciary may send the person in jail. That is called under trial if the case is non-bailable. Right? If case is bailable, if someone demand bail, then bail will be given. Bail is illegal right. If bail is not asked, person will go in jail. For the petty crimes, there are people in jail. Because why? Because there are no person behind them who can claim for bail. Bail के लिए claim ही नहीं होता है. Right? Look at Sanjana Khatun का जो case है, right?
उस समय if you look at, I have given the certain data about the under trial, right? Look at more than 77 prisoners, 77% of prisoners are under trial. It means only 23% convicted person are living in jail. If you look at the condition of jail, is very poor, very pathetic. Yes. तुम्हारे घर के पास भी जेल है क्या? उधर तिहाड़ किधर है? I've never been to. वहीं पे है ना, उधर ही है, राइट? जहां मैं रहता हूं उधर मंडोली जेल है. मंडोली, अभी द्वारका में एक शादी हुआ है बिटवीन टू गैंगस्टर, मिंज एंड, लड़की का नाम मिंज है और लड़के का नाम है, you're right, संदीप समथिंग. हाँ, जो भी लेते थे वो दोनों, वो मंडोली जेल. Have you not seen the newspaper? Newspaper have covered it, right? Anyway, but they are in under trial, right? ठीक है, they are, sorry, they are convicted. पुलिस पे डिपेंड करता है. पुलिस पे डिपेंड करता है. आपको पता है इंडियन पुलिस कितना एफिशिएंट है? आपको पता है उसकी अंग्रेजी कितनी आती है? आप नहीं पता है आपको, राइट? लुक एट दिल्ली क्राइम, लुक एट पुलिस. उसको बोलता है कि अरे तुम लोग नहीं लिख सकते, मेरे बच्चे को थोड़ा हेल्प ले लो, राइट? वो सही से लिख देगा. तुम सही से लिखा तो करो, राइट? तो आपको पता है कि कितना टाइम लेगी, ठीक है? उसके बाद let me tell you, it is a true reality that police, as an institution, they are understaffed. Right? And they don't have a quality police. Let me tell you, उनको डंडा चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है. डंडा, बंदूक, ये सब वो सब चलाएंगे. उसमें बहुत तेज है. उसमें तो श्रवण्या भी तेज है, राइट? सर मुझे भी लाठी मिल जाए तो भाजना किसको नहीं आता है, right? I can do that, fine, but they are not efficient. Let me tell you, Indian police are not efficient, right? Secondly, if you look at the colonial legacy of the police we have, right? We have police to harass the person. Let me tell you, during British time क्या होता था? पुलिस ने पकड़ लिया, right? उसके बाद तो फिर हाँ कुटाई ही है और दूसरा नहीं है. कुटाई या कुछ पैसे दे दो. अगर बड़े आदमी है तो पैसे दे दो. नींद आ रही इसको, रात को नहीं सोया, नींद आ रही तुमको, कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से. If you want that, fine, it's fine for me, right? So now got the idea of under trial. देखो ये, this is a smaller thing. UPSC क्वेश्चन पूछती है, छोटी छोटी चीजें है, राइट? बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये सब को पढ़ने लायक चीज है? ये पढ़ाने लायक चीज नहीं है, ये ऑब्जर्व करने लायक चीज है, right? That you should understand by the reading newspaper. By the reading newspaper, let me tell you, something is not being taught, should not be being taught. But why I'm teaching you, because थोड़ा clarification हो जाएगा and you'll focus on it. Question पूछे है, question आया है और आता है. For example, contempt of court क्या होता है? You should know about it. What is contempt of court? What are the charges of contempt of court? What can be the charges of contempt of court? Few judgment regarding contempt of court. Basic idea है. These are the basic idea. So got the idea, under trial and police custody. This is also called judicial custody and police custody, right? Now, did you get the under trial? Okay, what is trial? एक अभी मैंने देखा नहीं है, बट आता है ट्रायल करके. काजोल is a actor, right? She's an actress, sorry, right? मैंने देखा नहीं है. वकील होती है. अच्छा, ट्रायल का मतलब क्या होता है? कुछ और ज्यादा 2-4 लाइन बताओ, 2-4 वर्ड में बताओ. What is trial? Yeah, it is called the hearing period. फर्स्ट डे से शुरू जो हियरिंग होता है और एक दिन में तो होता नहीं है, टिल द लास्ट डे, दैट इज कॉल्ड ट्रायल पीरियड. What the idea? The trial period is the beginning of hearing till the end of hearing, right? The end of the judgment given by the court, that is called trial period. समझ में आया? ट्रायल पीरियड, ट्रायल का मतलब ही होता है, राइट? और उसके बीच में एक दिन जो होता है उसको बोलते हैं हम हियरिंग, राइट? जो पेशी कहते हैं, हिंदी में पेशी कहते हैं, उसको ले जाते हैं, राइट? That is called पर्टिकुलर डे हियरिंग.
hearing on that day, hearing on that day. The entire period is called trial period. समझ में आया? Now, if you look at if the person, acha, if you look at if the person in judicial custody, right? कोई नहीं आया लेने, तो court भी bothered नहीं है, state is also not bothered, कि leave them, right? And for the petty crimes, people spend years and years on jail, right? Even for the petty crimes, whose punishment may not be 1 year or 2 years, but person have actually, spent jail for 7 years, 5 years. Yes. सॉरी, क्या मतलब है जेल इंचार्ज को? आप आपके बिहेवियर जेल, वही पुलिस वाला होता है जेल इंचार्ज. Jail in charge is a police person, and you know attitude of a police person. When if a person is under trial, you know the how we behave with the under trial. We common people how to behave if someone is still accused. Let me tell you, convicted तब तो ठीक है, right? तो बिहेवियर तो हमारे सोसाइटी का अच्छा नहीं है. अंडर ट्रायल के साथ पुलिस के अंडर बिहेव करेगी. राइट उसी के बाद तो ये लिखा है हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में. Look at the judgment. The PN Bhagwati was a judge, right? In 1979, right, in Husainara Khatun versus the state of Bihar, the Supreme Court has made a very much landmark judgment, right? और उसने क्या कहा कि if person has been already spent in jail more than the punishment that person deserves, immediately you release from the jail. Immediately the person should be released from the jail, and the right to speedy trial should be the fundamental right under Article 21. Right to speedy trial should be right. Now if you look at as per उस दिन उसने culpable homicide पूछा था, right? देखो मर्डर होता है सेक्शन 302, ये है 304. Those in jail for over 6 months, culpable homicide, and culpable homicide का exact मतलब होता है कि some person have killed, right? But there is no evidence, right? There is no evidence, but that is understood that person has killed, right? Without intention. अब जेल तो मिलेगा. आप मान लो तुम कार चला रहे हो और किसी को धक्का मत लगा दिया without intention, but you have done the crime ना. Killing someone is a crime. सलमान को कुछ नहीं हुआ यार, ये उसको ड्राइवर को हुआ. आई एम नॉट फॉलोइंग द सलमान खान केस. यस इट हैपेंस. बहुत लोग सलमान खान के उसमें आ गए, किसमें, सपोर्ट में, कि अगर लोग रोड पे सोएंगे कुत्ते की तरह तो मरेंगे ही. दैट इज इट, राइट? आपने कौन सी मूवी, वही मूवी है जॉली एलएलबी. In Jolly LLB, people were lying outside the road, right? Sorry, on the pavement, right? और वो आता है और वो चल के चला जाता है. Exactly. और वो एक रहता है that becomes handicapped and he went to Gorakhpur. I remember now. So I don't know, sir. I am not following Salman Khan. He may be on bail. आपको पता है जुडिशरी का 5 crore cases are pending. 5 crore, and more than 4.5 crore cases are pending before the subordinate judiciary, right? Do you know India's position in corruption? 2014 के बाद हम corruption के बारे में बातें नहीं करते, right? Now we are talking about guarantee. मैं बता रहा हूँ, when I was child ना, दुकान पे लिखा रहता था फैशन के दौर में गारंटी, नो बाबा नो. ना बाबा, फैशन के दौर में गारंटी, नो बाबा नो. अब है हर चीज में मोदी की गारंटी, हर चीज में, right? So anyway, the regime has changed. We have not heard about corruption, but but we cannot deny there is no corruption, right? There is a fact. Whether media exposes it or not doesn't matter, but ऐसा तो नहीं corruption नहीं है. Do you know India's position in corruption in World Corruption Report? अच्छा,
which institutions in India are most corrupt? No. According to the report, आपका no. Three institutions are more corrupt in India. One is police, second is subordinate judiciary, and third is politician. सीधे साधे होते हैं. Politicians are, very simple, sober. है ना, उसको फिर ऐसे भी घुमा दो तो ऐसे घूम जाएगा, right? हाँ, भोले वाले होते हैं. Anyway, so that is now let me tell you. अब क्या होता है कि after the trial, there, in the trial what happens? The punishment is fixed, or the person is acquitted. Let me tell you, there may be two conditions. One, either person can be convicted and sentenced, or the person can be acquitted by इज्जत बरी, जो तुम कह रहे थे यहां पर होता है. If person is in convicted, then they go to jail. अब कैपिटल पनिशमेंट मत लेना सर, कैपिटल पनिशमेंट भी होता है, बट यहां हम सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहे हैं. पर्सन गोज टू jail. Now, one thing you should make it consider, if A has spent 2 years as under trial, and after 2 years, A has received 14 years as a punishment, right? Now, what will happen after the judgment? The A will spend only 12 years, because this tenure of jail shall be reduced from the entire tenure. समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लो कि A is under trial. He already spent 2 years as under trial, and then trial has started. Now, after the trial, the court has given judgment that he shall live 14 years in jail, rigorous punishment, right? Huh? देखो, एक होता है imprisonment till death. एक होता है lifetime imprisonment. The most productive life shall be spent in jail. It may be 14 years, it may be 18 years, right? ठीक है? मान लो कि 14 years है, 14 years उसको जेल दिया. Now, after giving the this judgment, now this person will not spend 14 years, 12 साल, क्योंकि 2 साल already वो बिता चुका है. Because 2 years he had already spent as a under trial, and therefore their punishment would be 12 years in total. But consider, in a house there are marriage. In a house there is some marriage or some death or something happen. Now, can A come outside? Right? What is that called? That is called parole. Yeah. The A can come out, right? And on parole. Yeah. जॉली LLB उसमें भी पैरोल पे आता है शादी के लिए, जिसके वक्त इनकाउंटर हो जाता है उसका. Am I right? या ओके, हाँ सही बोल रही हो. अभी भी तो लड़का जो शादी करने आया द्वारका में, दैट इज ऑन पेरोल, राइट? ऑन पेरोल. अच्छा, इज अ पेरोल लीगल राइट? द क्वेश्चन इज दैट. Is parole a legal right? Parole is not a legal right. Let me tell you, there are two judges, two high court judges, where the इसमें नहीं लिखा है आर्टिकल 22 मिलेगा तो उसमें शायद होगा पेरोल ये वगैरह वगैरह. एनीवे, कहानी सुन लो, हो ना हो बाद में लिख लेना. If parole is not a legal right, it is a privileges according to the Supreme Court judgment. Right? What is parole? Parole is a पेरोल इज कॉल्ड, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म फ्रीडम. शॉर्ट टर्म फ्रीडम फ्रॉम जेल. टू sentenced person. A short term, it's very practical things, right? Nothing can be, right? बहुत practical चीजें हैं. So it is a parole is a short term freedom from jail to the sentenced person. Now parole is not a legal right.
पेरोल इज अ प्रिविलेज। पेरोल क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन पेरोल इज अ प्रिविलेज, द कोर्ट में ग्रांट पेरोल, कोर्ट में नॉट ग्रांट पेरोल। लेट मी टेल यू, अगर घर में शादी ही हुआ तो क्या हुआ? कोर्ट में नॉट ग्रांट पेरोल। लीगल राइट है, देन इट इज अ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू गिव, to grant bail. If you apply bail, bail will be given. But if you apply, if a person apply for parole, court may not give parole. समझ में आया? Parole is a privilege. Parole is not a legal right. अच्छा, what is judicial custody? What is police custody? Clear? Right? In the police custody, person stay in the police lockup. In the judicial custody, police is spent in jail. Right? वही पुलिस लॉकअप में रखता है, उसी को पुलिस पुलिस अपने घर में थोड़ी ले जाएगा। पुलिस स्टेशन में पूरा प्रॉपर लॉकअप होता है और वहीं पे रखते हैं, अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, चलिए खाना खिला के लाते हैं हमको। हाँ, राइट। हाँ, जो जेल होता है, जैसे मंडोली जेल है दिल्ली में या तिहाड़ जेल है, वो अलग है। हाँ, देख के आइयो, घूम के आइयो बाहर से। अंदर भी जाना चाहिए। सी, अंदर भी जाना चाहिए। अगर इफ यू गेट सर्टेन ओकेजन्स, यू शुड गो एंड सी, राइट। एक छोटा सा रूम है, उसमें 30 लोग रह रहे हैं। सोने के लिए, मतलब जो लेटना है ना, और बाकी लोग बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे। सोने के लिए नंबर लगता है, 4 घंटे तू सोएगा, उठेगा, फिर मैं सोऊंगा, फिर मैं उठूंगा, ये सोएगा। मैंने क्या कहा? दे आर अंडर ट्रायल। 77 ऐसा नहीं है। आपको पुलिस पकड़ ले जाती है तो आपके बारे में सब सोचेंगे, क्राइम की होगी जरूर। आपको कैसे लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, राइट? ठीक है। तो जब तक इंसान कन्विक्ट नहीं हो जाता है, even let me tell you, even sometimes after conviction the person spent jail 22 years, उसके बाद कोर्ट को पता चलता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ब्लंडर हो गया, राइट? हाँ, कोई that is a that is the we should raise the voice. देखो क्या है ना, क्या है कि if you don't demand, government will not give you certain rights. Rights are actually evolved, and rights are evolved on the demand made by the people, right? Sorry, जुडिशरी क्यों इन्वॉल्व होगा? जुडिशरी को क्या स्टेक है? जब तक आप जुडिशरी पे जाएंगे नहीं, आप पीआईएल फाइल नहीं करेंगे कि देयर शुड बी कंपनसेशन इफ द पर्सन हैज wrongfully convicted and had spent certain years in jail, who cares? Huh? But anyway, हाँ, क्यों नहीं जा सकते? कोई भी जा सकता है। अच्छा प्लान है, एक्सिक्यूट करो उसको, राइट? अच्छा, डिड यू गेट द आइडिया? Right? Now what happened? See, about the under trial, there is a concern. Look at, according to the National Crime Record Bureau, 77% people are under trial. And even on the law day last year, Draupadi Murmu actually raised the concern about the under trial. The present budget, the last year budget 2023-24, also actually concerned about that financial support should be given for the poor prisoners who even cannot afford the bail. Let me tell you, there are people who cannot afford bail. आपको poverty का dimension नहीं पता है। 200 रुपए भी लोग के पास नहीं होते हैं, साक्षी। लोगों के पास 200 रुपए भी नहीं होते हैं। कोई नहीं देता है किसी को। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग हो नहीं। सॉरी, अभी क्या हुआ? लेट मी टेल यू, one girl have done her law degree,
मैं कल का न्यूज बता रहा हूँ. And on degree, she found her father's name only. She filed a PIL in the High Court and requested to make it mandatory that mother's name should also appear on the degree. Now, High Court has given, a judgment that after March 2024, whatever degree will be there, the both mother and father name should be included. Very good, na? So, इसी तरह आपको मतलब the people should have will have to take their steps. Otherwise, कौन करेगा? कोर्ट के पास ऐसे इतना है ना, सोचने का टाइम नहीं है, right? So you have to raise the voice, ठीक है? And then court will take steps. आप आगे बढ़ोगे तो दूसरा हेल्प करेगा. If you are not stepping forward, nobody will help you. Help yourself first, then other will come and forward to help you. हाँ, लोग आएंगे आपको परेशान करने भी आएंगे. That is on the same time you will find the difficulty. People will come, क्या है, ऐसा मत करो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. That will happen. Right? Got the idea? थोड़ा एक पिक्चर बना लोगे, कुछ ऐसा, कुछ जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी बना लिया है. राइट? समझ में आया? पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, बेल, पेरोल. राइट? मैंने क्या कहा? राइट्स आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट. आपको बहुत सारे राइट्स पता नहीं थे. मुझे बताओ कि पता थे ये राइट्स. अभी भी और भी राइट्स पता नहीं आपको. लेट मी टेल यू. एंड व्हाई डू वी कंसल्ट लॉयर? बिकॉज उनको पता है एंड दे आर इन प्रैक्टिस. दे नो व्हाट राइट यू हैव. पता होना चाहिए. आपको मैं बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर इज अ वन कोर्स कॉल्ड आवर लॉ आवर राइट्स. एक पेपर है, राइट, जो भी सेम में होता है वो पढ़ाया जाता है कि these are the laws and these are the rights of a person. Let me tell you one rights about them. If any woman, right, who's working in any organization, right, and she become pregnant, any organization cannot remove them, right? But पता नहीं होता है, उनको हटा दिया जाता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि this lady is pregnant, immediately उसको, because she will demand maternity relief, मांगेगी ना, बोलेगी 6 महीने में घर पे रहूंगी. अब 6 महीने कौन बियर करेगा? 6 months, 26 weeks. 26 weeks is a maternity relief. But पता नहीं होता है लोग. In absence of law, in absence of awareness, legal awareness, we don't claim. At least claim तो करो कम से कम. मिलना ना मिलना वो बाद की बात है. At least you claim for your rights. If you don't claim, let me tell you, there are people, who are ready to fool you. Right? Every steps, if you don't decide, other people will decide about you. Right? So be a aware citizen, conscious citizen. That's rights का पूरा concept वही है. Feel empowered citizen. Right? Empowerment कैसे आएगा? When you understand about your rights and apply. Understanding से नहीं होता है. You have to also apply whenever needed. और ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती किसी के में घुस जाना है. नहीं, मैं जानता हूं, मैं बताऊंगी. नहीं. Whenever you are not consulted, don't try to be. होता है ना? हाँ. Until you don't require, मतलब don't be consulted. Don't try to involve into that. Right? When you are consulted, then help assist the person whatever capacity you have. That's it. Fine. समझ में आया ये? Right? Now, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट लिखोगे या इसमें से नोट्स में से लिख लोगे? Just I should tell you what are the court judgment in हुसैनरा खातून. हुसैनरा खातून में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि release all the categories of under trial who are under the civil imprisonment, those in the custody for 15 days for an offenses with maximum less than 7 years, senior citizen in custody over 3 months for offenses whether maximum sentence is less than 10 years. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ो बस, इतना पूछेगा कोई नहीं. Right? But ये पता होना चाहिए कि हुसैनरा खातून was a landmark judgment
where Supreme Court has granted, bail or released the under trial, right? And right to speedy trial is a fundamental right under this judgment. इतना पता होना चाहिए, समझ में आया? इतना पता होना चाहिए. और आप जब इसको पढ़ोगे, आज आई वाज रीडिंग टुडे, इट्स वेरी हेल्पफुल, लेट मी टेल यू. बहुत अच्छा है ये. जो आर्टिकल है, आर्टिकल के नीचे नोट्स लिखा हुआ है, उस नोट्स को जरूर पढ़िए. एवरी आर्टिकल एंड देयर आर एक्सप्लेनेशन, रीड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, उसको साथ साथ में करते जाना है. हाँ, I told you that bail is a legal right. Now, if you look at in Satyendra Kumar versus CBI 2022, now in that case, Supreme Court said the rate of conviction in criminal cases in India is abysmally low. Supreme Court said criminal justice system may not be necessarily punished a person criminal swiftly at all. Trial court think denial of bail is punishment. It means if court think that he will not give, bail, it is a crime from the side of the court, right? मैं कहीं bail लिखा हूँ, there are different conditions of bail. कहीं मिला क्या notes में? कहाँ था? There somewhere it may be that there are different conditions. I don't know where I have put. UAPA debate नहीं है इसमें. Let me see. मैं देखता हूँ. There are Supreme Court guideline on bail, right? Except a killer, everyone should get bail. Even woman is a killer, they should deserve bail, according to that Supreme Court guideline. ठीक है? Sorry. इतने privileges नहीं है लिखी. See, जो criminal justice system है ना, उसका काम ये नहीं है कि उसका काम है कि रिफॉर्म कराना, रिफॉर्म लाना, rather than making things vulnerable, right? Yeah, there are one debate on Criminal Procedure Act. आप लोगों ने पढ़ा इसको? अच्छा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिबेट पढ़ लीजिएगा. ह्यूमन राइट्स, कैन यू रीड व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? आई हैव टॉट यू ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या है? Yes. A set of rights declared by the Universal Declaration of Human Rights, passed by the United Nations General Assembly on what date? 10th December 1948. It has a preamble. ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था. It has a preamble and 30 articles, right? It has a preamble and 30 articles. Now, if you look at here, जो मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर preamble क्या कहता है? What are the basic points in preamble, right? And also I had given analysis of article 30 articles. If you look at, so preamble talks about, the freedom, freedom from wants and fear, right? All human beings have dignity and freedom, which is inalienable. Inalienable matlab inseparable, right? That cannot be separated. Like dignity, right to dignity cannot be separated from individual, right? Now, if you look at Article 1 and Article 2 are the principles of human rights. As you read Article 1 and Article 2. For example, if you look at Article 1, which says humans are born free and equal in dignity and rights. If you look at Article 1, right, कहीं पर भी मान लो कि rights के बारे में आए या human rights के बारे में आपके पास, human rights are very much, very much always issue which is asked in the examination, right? तो आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है? जब भी क्वेश्चन कुछ भी आए ना, कुछ भी क्वेश्चन कहीं पर भी, उसका हर एक एंगल होता है, राइट? उसका सोशल एंगल होता है, राइट? सोशल रीजन होता है, देयर आर इकोनॉमिक रीजन, देयर आर हिस्टोरिकल रीजन, राइट? ये दिमाग में रखिए. देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राइट? अब कुछ है, अब सोचो कि हमें लिखना क्या है आगे. हमें तो ये बस पता है, थिंक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट इवेंट्स,
think about what Gandhi said. For this example, what Gandhi and what Ambedkar are, had advocated about that, right? What are the social causes for that? What are the economic consequences and reason for that? You can include into that answer. Nahi? That will make your actually answer more rich and diverse, right? If you have certain report, for example, sometimes you may have report of Niti Aayog, sometime you may have report on, the Law Commission, sometimes you may have report on the World Inequality Report, or sometimes you may have report on the Global Gender Gap Report, right? तो जो भी रिपोर्ट आपको पता है, पता चल जाएगा, आपको तैयारी करते करते सारा कुछ पता चल जाएगा, राइट? तो एक ही चीज को हम अलग अलग जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, फाइन. हाँ, बट ऑफ कोर्स ऑलवेज माइंड, ये बहुत माइंड, ये दिमाग में जरूर रख रहा है. पता चला क्वेश्चन कुछ है और है, पूछ और रहा है, राइट? हम बोल कुछ और है, राइट? सो अच्छा, आर्टिकल 1 क्या कहता है यूडीएचआर का? ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स एंड डिग्निटी. अच्छा, आर्टिकल 2 क्या कहता है? Yeah. It says everyone is entitled to all the human rights and freedom without distinction of race, caste, ethnicity, language, political opinion, nationality. It doesn't matter वो पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान का है या म्यांमार का, it doesn't matter, right? It doesn't matter, gender क्या है, it doesn't matter political opinion क्या है, it doesn't matter, right? Every person have, a human right. And let me tell you, India is a signatory of the UDHR. India is a signatory of UDHR. Now, अगर आप बात करोगे कि if you look at, there are so many international convention, right? मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ. There are so many. एक तो UDHR, this is international convention, UDHR, right? ठीक है? अच्छा, मैंने ये बता दिया, थोड़ा convention बाद में बताता हूँ. If you look at article 3.2.22 ना, it is talks about civil and political rights, right? And 23 to 27 it talks about social and economic welfare rights, and 28 to 30 it talks about the circumstances within which a person will get their human rights, right? Now let me tell you that UDHR is a international resolution, right, passed by the UNGA, and India is a signatory. Now let me tell you, there is a one international convention that is called Social and Economic International Covenant on social or political rights. Political rights. (1966). Now, India is a signatory of this. India is not a signatory of one major convention, that is on refugee. Right? There is a one convention by the United Nations, that is Convention on Refugee. India is not a signatory. लिख लेना है सबको, क्योंकि prelims में पूछता है, right? Right? हो सकता है international relation में skip कर जाओ, right? So India is a signatory of this. India is a signatory of the rights on children, women. दो पे नहीं, racial discrimination against racial segregation पे, racial discrimination पे India is not a signatory. किस पे? Refugee, right? And racial discrimination. On this international convention, India is not signatory. International convention, right, on refugee and racial discrimination, India is not signatory. India is मर्जी है नहीं साइन किया. मैं बोला ना, इंटरनेशनल रिलेशन में यू आर इंडिपेंडेंट. मैं उस दिन एक चीज बताया, इंटरनेशनल एरिना में क्या होता है, एनार्की.
इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि स्टेट इज अ प्राइम एक्टर, state is a prime actor, no other state can influence it, it is a sovereign one, it can take their own decision. रेफ्यूजी का अगर करने लगोगे तो बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजी आए हैं. हाँ, racial discrimination, India believe that it has no some such racial discrimination. The caste discrimination is considered as a major discrimination in India. ठीक है, caste discrimination is not racial discrimination according to the scholar, right? अच्छा, इंटरनेशनल कन्वेंशन किस पे नहीं है? इस पे साइन नहीं है. अदरवाइज एवरी इंटरनेशनल कन्वेंशन, whether it is on women, whether it is on persons with disability, whether it is on children, on all international convention, India is a signatory. इतना जानना काफी है. ठीक है, तुम रात को नहीं सोई क्या? बिल्कुल भी नहीं सोई. अभी भी उसका सोने का जो वो है ना, सबके जैसे खाने का सबका अमाउंट अलग अलग होता है, उसका सोने का अमाउंट ऐसा कुछ होगा. उसको उसका मन भरा नहीं है अभी, है ना, इसीलिए. और अपने मन भर के सोना चाहिए. लेट मी टेल यू, सोना चाहिए मन भर के, उसके बाद पढ़ो ना. यही सुनना चाहता था. मतलब अब देखो, नॉर्मल है कि एक्सीड भी नहीं करो. आप सोच रहे 12 घंटा हम सो ही रहे हैं, राइट? 12 hours you are sleeping, there is no use of it. मैं बता रहा हूं, आपका बॉडी है, इफ यू स्लीप 7 to 8 hours is sufficient, राइट? अदरवाइज मन तो ऐसे करता है कि यहीं पर लेट जाऊं. लेट मी टेल यू, मन का क्या है, दिल की बात, मन की बात क्या है, राइट? मन का अगर करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा. मन तो ये कहता है कुछ काम ना करे यार, एक अच्छी सी गाड़ी हो, कहीं चले घूमने, राइट? ऋषिकेश घूमने, अच्छा कोई खाना दे दे, बहुत अच्छा सा, जो खाना देखते ही योर एपेटाइट बढ़ जाए. मान लो आपका पेट भी भरा हो, इफ फूड इज गुड, योर एपेटाइट इंक्रीजेस, राइट? सो ऐसा कोई खाना आ जाए, राइट? पानी लेके दे दे, साहब साहब करते रहे, मैडम मैडम करते रहे, राइट? टाइम ऐसा ही चला जाए. बट लाइक होता है ना, इट एक्चुअली दैट इज अ फीलिंग, बट दैट इज नॉट द रियल लाइफ. ठीक है, ये रोमांस है जो मैं बता रहा हूं आपको. दिस रोमांस मतलब समथिंग थिंकिंग विच इज नॉट रियल, राइट? यूटोपिया, राइट? यस, यू हैव टू स्ट्रगल एट ऑल द लेवल. अच्छा, एक और है, आई विल टॉक अबाउट डिटेंशन नेक्स्ट क्लास. देयर इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022. ह्यूमन राइट इज क्लियर? डू यस बोलो. सॉरी करते हैं कुछ लोग. लेट मी टेल यू, अभी जो इंश्योरेंस का ये आया ना, द एंटायर गेम ऑफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और दिस इंश्योरेंस और दैट इंश्योरेंस, इंसान क्या करता है, अपने आप को डेथ डिक्लेयर कर देता है, करवा लेता है, एंड दे क्लेम फॉर मनी. फ्रॉड तो हर जगह है, इट हैपेंस. अरे लोग करा लेते, जो जिनको ये करना होता करोड़ों का करा लेते. आसानी से नहीं है, ऑफ कोर्स. मैं तो आई फाइंड एंटायर दिस इंश्योरेंस बिजनेस इज अ फ्रॉड. एंटायर इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना, LIC perhaps it is a comparatively good. जीवन के बाद भी जीवन कैसे होना. एनीवे, हाँ, अचानक वो फिर से जिंदा हो जाए, लीगल प्रोसीजर विल बी टेक प्लेस. लीगल प्रोसीजर, मैं बोला कि लीगल प्रोसीजर्स. हाँ, ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है. सी या दिस इज अ ह्यूमर. देयर इज वन मूवी कॉल्ड, कौन सा, मुसद्दी लाल चला ऑफिस. देयर इज वन मूवी दैट
वो उस पर्सन को डेथ डिक्लेयर करता है, देयर इज नो पेंशन रिलीज बाय द बैंक, राइट? इट डज, ये कहानी है, 1-2 स्टोरी होता है, राइट? बट द लीगल एक्शन कैन बी टेकन अप फॉर देम. Now, if you, with the advent of new technology, it has become more transparent. सीधा फिंगरप्रिंट लगाओ, पता चल जाए आप जिंदा हो. अब गवर्नमेंट करती है, पता है ना, the pensioner have to put a legal, the fingerprint. एक बार फिंगर दे दो आप, पूरे साल में कंसिडर किया जाता है कि आप साल में जिंदा हो. अगले साल नहीं लगाए तो गए. हाँ, अगर 3 साल बाद लगा दे तो 3 साल का मिलता है इकट्ठा, राइट? लेट मी टेल यू, देयर इज अ वृद्धा पेंशन स्कीम. वृद्धा means the old age pension scheme. Now in villages what happens, लोगों को पता नहीं होता कब मार्क लगाना है, नहीं लगाना है. After 3 years they got to know कि लगाना है, then वो जाके लगाते हैं और last 3 years का उनको मिल जाता है ओल्ड एज पेंशन, राइट? तो ऐसा है, वो मुसद्दी लाल की कहानी जो है ना, होता है ऑफ कोर्स, बट दैट इज नॉट जनरल. अच्छा, ये क्लियर है? टाइम हो गया है. नाउ लेट मी टू टॉक अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट. ये क्या है बताया था? आप करंट में भी पढ़ोगे, करंट में अब तो नहीं पढ़ाएंगे शायद. लीगल प्रोसीजर एक्ट बेसिकली इट रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एक्ट 1920. replaced identification of person act 1920. Let me tell you what is this identification of person act. Actually, when police arrest someone, the police have a right to collect certain data, certain measurement, like handwritten notes or blood sample. This law permits the police to get some data, right? Now, this Criminal Procedure Act extended the rights of the police to collect more data. समझ में आया? Permits police to collect measurement, of arrested person, persons like blood sample, handwriting, tissue sample, क्या हुआ? किसको? तुम आपस में बात करना. इसके बारे में. Don't involve me. Right? Now, what happens? The Criminal Procedure Act, it extends the rights of the police to collect the certain measurements. This law extended more rights to police to collect measurement or collect data. अब कौन कौन से डेटा ले सकता है? द आई स्कैन, राइट? रेटिना स्कैन, राइट? और क्या है? द ब्लड सैंपल, बायोलॉजिकल डेटा, रेटिना स्कैन. दिस इज हेयर सैंपल, राइट? हैंड रिटन हेयर सैंपल, बायोलॉजिकल डेटा. इट कैन बायोलॉजिकल डेटा, यस बायोलॉजिकल डेटा. और दूसरा है रेटिना स्कैन. हाँ जी, वो आधार कार्ड में जो आंख में घुसा दिया था और निकाला था, वही सेम. वो आधार कार्ड वाला बोलेगा आपका आधार कार्ड बना रहे हैं, यहाँ से फिर से चेक करें आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं है, और आपका पूरा वो ले लिया. हाँ, मजेदार है. बट देयर आर मेनी क्रिटिक्स व्हिच सेज दैट it is not, it actually harms the right to privacy and personal liberty. रेटिना क्यों दोगे तुम? तुम्हारा रेटिना तुम्हारा है, तुम क्यों दोगी? ये बताओ.
My retina is my retina. Why should I share some with someone? Your body, see, your bodily integration, the body autonomy is violated now. Right? Someone cannot touch you even without your permission. Cannot see you without your permission. Let me tell you, this is a violence. Right? See मतलब staring is not allowed. अब seeing मतलब ऐसा नहीं कि हम मैं इधर नहीं देखूं इधर नहीं देखूं. Staring, right? The continuous looking at someone, right? With the bad intention, of course. समझ में आया? कोई देख रहा है कि अच्छा फलाना है कि नहीं है, मतलब पहचानने में तो वो इंटेंशन बैड इंटेंशन नहीं हो. होता है ना, गांव से कोई आए और बोले कि यार वही लड़की है जो मेरे मोहल्ले में रहती है, थोड़ा दही से दही देखने दो. So that is not bad intention. Bad intention, you have certain, bad intention, right? If someone has bad intention, no one has a right to do that. It harms the individual's body's autonomy, right? And bodily integrity, right? So retina mein problem hai. Anyway, so now this law also allow NCRB, National Crime Record Bureau, to store its data for the next 75 years. Right? Can store data for 75 years. आधार कार्ड मैं बता रहा हूँ. आधार कार्ड was actually, if you ask me, right, आधार कार्ड should not have been taken by the government. आपके पास कितना आइडेंटिटी कार्ड है मुझे बताओ. You have PAN card, you have आधार और क्या वोटर कार्ड, you have और कार्ड कौन सा है. कॉलेज का आई कार्ड एक अलग होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक और है, राइट. नाउ यू हैव आधार. व्हाट इज द यूज ऑफ इट आधार कार्ड, राइट. नाउ यूज इज द गवर्नमेंट proposition is to reduce corruption. आधार कार्ड में भी used, but what would be the cost? Let me tell you, the cost would be the violation of privacy, right. Why case Puttaswamy case, the Supreme Court, that was a 9 judges bench. In case Puttaswamy case, Supreme Court said right to privacy cannot be violated. बिल को इनवैलिड नहीं किया. तुमने उसको नहीं पढ़ा, क्रिस्टोफर को? हाँ, बिल को नहीं किया. Aadhaar bill was introduced as a money bill. When I'll teach you money bill, will tell you what is money bill. Aadhaar bill does not deserve to be presented in the parliament or in the Lok Sabha on the case of the money bill. It has nothing to do with the money bill. Exactly, राज्यसभा में जाएगा नहीं. राज्यसभा में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी गवर्नमेंट की, तो आधार बिल पास नहीं होगा. सॉरी, वो बाद में बात करेंगे, मनी बिल के बाद, मनी बिल के बाद. अच्छा, ये हो गया, मुझे एक खत्म कर लेने दीजिए. राइट, on Monday I'll start prevention detention, article 22. 1 more minute. अच्छा, खत्म हो गया. There is a PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act. You read, we have already discussed Prevention of Money Laundering Act. This is also a draconian law, right? And you can say that judicial evasion. Judiciary has not, already there is a committee, judiciary has looking at this law, and judiciary has said we have to, struck down certain provision of the PMLA Act. PMLA Act is a draconian. आपको पता है, जब मैंने आपको बताया कि शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर का केस को लेजिटिमाइज कर दिया, राइट. द आर्टिकल 20, द सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमाइज द गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू टेक राइट टू लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी. नाउ द जज वाज द चंद्रचूड़. लेटर ऑन ही रिग्रेटेड. इनके फादर, he regretted what I have done. I should not have bowed down before the government. Right? So with this, I'll stop here. Yes, right? You finish Article 21. Next class, we'll talk about Article 22. Especially, I'll talk about. अच्छा, right to abortion के ऊपर है, उससे पढ़ लेना. Right to abortion. Right to abortion is a right of a woman under the Article 21. Right? There is a debate on abortion. Right?
So उसको पढ़ लीजिएगा. 22 we will discuss in the next class. If you have any doubt related to any element of Article 21, we can discuss that on Monday. ठीक है? So उसको पढ़िए, उसको apply करिए. Apply when you know you'll be asked question. Next Saturday we'll have a test, subjective test. ठीक है? On these all issues. On these all issues, right? ठीक है? चलो, shall we stop here, Vanita? See you.